Moving on, the International Society for Krishna Consciousness has alleged that its center in Dhaka district in neighboring Bangladesh was burned down on Saturday. This comes amid the ongoing unrest in Bangladesh over ISKCON leader Chinmoy Krishnadas' arrest. Now, ISKCON Kolkata Vice President Radharaman Das said that targeted attacks on the members of community continues unabated in the country. In a series of posts on social media platform X, he said nothing is being done by Bangladesh police to check the rising attacks on the community in Bangladesh. आज सवेरे 2 से 3 बजे के बीच में इस्कॉन का एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में। वहाँ पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। वहाँ पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह था, श्री श्री राधा कृष्ण और बहुत सारे और भी डेटीज थे। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। Meanwhile, in a separate incident, another Hindu temple was allegedly set on fire in the outskirts of Dhaka. The Mahabhagya Lakshmi Narayan Mandir at Dhor village in north of Dhaka came under attack on late Friday night. The supervisor of the temple, Babu Ghosh, said that a complaint has been filed against unidentified miscreants for burning down his ancestral temple. এটা মানে আমাদেরই পারিবারিক মন্দির। তো এটা গত রাতে আপনার রাত 8টার দিকে এখানে কিছু দুর্বৃত্ত পিছন দিয়ে ওই যে টিনগুলো ওইখান থেকে স্ক্রু খুলে ওই দিক দিয়ে আপনার কি বলে ওই যে পেট্রোল দিয়ে অকটেন দিয়ে আগুন দিয়ে করে যেগুলো পুড়ে ফেলছে। এখানে যে আমাদের বিগ্রহ এটা হলো লক্ষ্মী, আমাদের লক্ষ্মী দেবী, তারপর নারায়ণ, এদের লক্ষ্মী দেবীর শাড়ি পরা ছিল। Arrest of ISKCON leader Chinmoy Krishnadas in Chittagong on October 25th on sedition charges has triggered protests in Bangladesh. Now, last week, India noted with deep concern the arrest and denial of bail to Krishnadas, who is also the spokesperson of the Bangladesh Sanatan Jagran. Now, India had urged Bangladesh authority to ensure the safety and security of Hindus and all minorities, including their right of freedom of peaceful assembly and expression.